carries its last breath in every heart. Our mother tongue is the first language we learn from our parents. It connects us to our roots, culture, and identity. For millions of people, our mother tongue is Sindhi. Sindhi is not just a language, it is the soul of our civilization. This language lives in our daily life. It is spoken at homes, villages, and during cultural celebrations. It has a very old history. It traces its roots back to the Indus Valley civilization. The Sindhi language has its own script and a rich literary heritage. The great poets like Shah Abdul Latif Bhittai used Sindhi language in poetry to spread messages of love, peace, and humanity. जेकर ॻाल्हि सिंधी ॿोली जी हुजे त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इन जे गीतनि खे कीअं थो विसारे सघिजे। ओ पिता जा पिताई भिट ते वसई नूर मुझ तो पुञायूं। ओ पिता जा पिताई भिट ते वसई नूर मुझ तो पुञायूं। ओ मुझ तो पुञायूं मन जूं उमेदूं। जेकॾहिं सभु आवाज़ माठ थी वञनि, जेकॾहिं लफ़्ज़ विसरी वञनि त छा सुञाणप ज़िंदा रही सघे थी? सिंध जिथे लफ़्ज़नि जनम वरितो, जिथे हर मिटीअ जो ज़रो ॻाल्हाईंदो हो सिंधी में। सिंधी ॿोली जंहिं शाह लतीफ़ जहिड़ा लफ़्ज़ ॾिना, सचल समस्त जहिड़ा ख़्याल ॾिना ऐं इंसानियत जो सबक़ सेखारियो। जॾहिं लफ़्ज़ जनम वठनि था त सुञाणप थिए थी। सिंधी ॿोली इन्ही लफ़्ज़नि मां आहे जेके वक़्त खां वधीक पुराणा। ही ॿोली रुगो किताबनि में बंदि न आहे, दरिया जी लहर, मिट्टी जी ख़ुशबू ऐं माण्हुनि जे ॻाल्हाइण में बि ज़िंदा आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ जा पेर सचनि जा लफ़्ज़ सिंधी ॿोली खे रूह अता कनि था। ॿोली विसारणु पंहिंजे पाण खे विसारण जे बराबरि आहे ऐं ॿोली बचाइणु पंहिंजे वजूद खे बचाइणु आहे। सिंधी ॿोली खे वधीक ख़ूबसूरत मुंहिंजूं शाइरियूं, नज़्म ऐं कहाणियूं बणाइनि। जीअं सिंधी में हिकिड़ी शाइरी आहे, कंहिंखे घर खां निकिरंदे ई मिली हुई मंज़िल ऐं के असां वांगुरु ज़िंदगी भर सफ़र में रहिया। ही शाइरी शेख अयाज़ लतीफ़ जी। इन खां अलावा सिंध जा केतिरा ई नामियारा शाइर आहिनि, जंहिंमें शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, शेख अयाज़ लतीफ़, जॉन इलाही ऐं काज़ी कादन जहिड़ा ॿिया केतिरा ई नाले वारा शाइर शामिल आहिनि। Protecting and promoting Sindhi means protecting our heritage. When we preserve our language, we preserve who we are. Sindhi is spoken in Sindh and represents deep cultural and historical roots. Sindhi ज़बान में सिंध जी रूह समायल आहे. It means the soul of Sindh lives in the Sindhi language. Language is more than just words. It is the memory of people, the carrier of their culture, and the foundation of their identity. This documentary explores Punjabi, the mother tongue of Pakistan's largest population. Its rich heritage and culture, and a connection of generation to tradition. Yet today, many people hesitate to speak Punjabi in public. They fear being judged or labeled Pendu. But Punjabi is not a flaw. It is history, emotion, and pride. Punjabi साडी बोली है. पंजाबी साड़ी बोली है. साडी बोली पंजाबी है. Pashto is spoken in Khyber Pakhtunkhwa and reflects strength and hospitality. Sa Pashto wayam da zaba zuban da. It means I speak Pashto because it's my language. Balochi represents the traditions and resilience of the people of Balochistan. बलोची ज़बान में फ़ख्र में पहचान है. This means that Balochi is our pride and our identity. However, why do we limit our mother tongue only to our homes? Why don't we speak it openly in public places and on media platforms? जी साहिबो, इट्स मी दानिश मेहदी. अस्सलाम वालेकुम साहिबो. मुंहिंजी भाणी जी मारूफ़ सवाल कयो आहे त मां साईं पाण पंहिंजी मदर टंग्स खे या पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ खे सिर्फ़ु घर ताईं महदूद छो कंदा आहियूं, ॿाहिरि घटि छो ॻाल्हाईंदा आहियूं? साहिबो अर्ज़ी आहे त अगरि पाण खे पंहिंजी मदर टंग ते या पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ ते एतमाद आहे ऐं मालूमात आहे त पाण यकीनन ॿाहिरि बि वधीक ॻाल्हाईंदासीं. सिंधी ॿोलीअ जी ॻाल्हि कयूं त पाण त हज़ारे साल पुराणी सक़ाफ़त रखंदा आहियूं, ट्रेडिशन रखंदा आहियूं. यकीनन पाण पंहिंजी सिंधी ॿोली न सिर्फ़ु घर में ॿाहिरि बि ॻाल्हाईंदासीं.
माहौल में हिक ॿ सिंधी दोस्त मौजूद आहिनि ऐं ॿिया बि ॻोल्हण वारा आहिनि। असांखे खपे त असां पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ खे उते प्रायोरिटी ॾियूं। जीअं त मुंहिंजो किताबु आहे जी साहिबो, हिन में ही सिंधी शायरी जो किताबु आहे, पर हिन में हिकिड़े पेज ते सिंधी शायरी, ॿिए पेज ते उर्दू शायरी आहे। जी साहिबो नालो आहे। त ही मीन्स मूंखे एतमाद आहे पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ ते ऐं अव्हांखे बि थियणु घुरिजे। बस इहो ई पॉइंट आहे। सो बी कॉन्फिडेंट ऑन योर मदर टंग। आई एम सिंधी ॿोली। थैंक यू वेरी मच। So now we are going to discuss the language which is endangered in this current era. That language is Datki. It can be listed in the Vanish language as well if those people who speaks Datki shall not protect or preserve it. Datki is an endangered regional language spoken mainly in the Thar Desert region of Sindh, Pakistan, especially in Tharparkar and in nearby parts of Rajasthan and Gujarat in India. Historically, Datki was spoken by farmers, herders and desert communities who relied on oral communication rather than written texts. Datki is not just a language, it is the voice of the desert, it is history, identity and culture. बारे गाँवे बोली बदले तरवर बदले साखा, बूझा पिण में केस बदल गए लक्षण न बदले लाखा। Every language carries a world within it, but what happens when that world begins to disappear? We live in a world where some languages are considered more important than others. Memoni is one such language. Spoken within families and communities, it remains alive in private spaces, yet it is gradually fading from everyday use. This documentary explores why languages like Memoni are becoming endangered. For example, in many Memon households, grandparents speak with each other in Memoni. They tell stories or give advices, but the children, they respond in Urdu or English, especially if they go to school or play with friends who don't speak Memoni. Sometimes parents also switch to Urdu to make the conversation easier. This is how the Memoni language is being disappeared in daily life, even though it's still the part of the culture. इसका नाम खाउस है और मुझे बहुत बुरा लगता है। खोसे में भी मेमोरी डिश है, वो ट्राई किया है। ये ट्राई नहीं करा मैंने। बीइंग ऑनेस्ट मैं खाउस ट्राई ना है क्यों? ये एक दफा ट्राई किया है, इट वाज नाइस। अच्छा था काफी। हाँ मैंने पिया था जब बहुत गर्मी हो रही थी। गुड़ जो शरबत है, गुड़ का शरबत पिया। आयो गुड़ जो शरबत है जो मीम याद आती है इंसान गुड़ का शरबत शाम में गर्मी में। आई डोंट नो अबाउट इट। शाही टुकड़ा लग रहा है तो। हाँ मालपुरा खाता है ना सा। हाँ ये भी ट्राई करा है मैंने। हाँ ये मालपुरा इन आई लव देम। There was a time when Memoni filled homes with laughter. It was spoken in kitchens, markets and family gatherings. Memoni wasn't just a language. It carried stories, blessings and memories. But slowly, things changed. When a language fed, we don't just lose words. We lose identity. We lose history. We lose part of ourselves. As the sun rises, a new day begins. Just like a language begins at home. Before we learn to speak the world's language, we first learn our mother tongue, the language of love, identity, and belonging. This is where our story begins. Across this land, many mother tongues are spoken. One of them is Brahawi, a language shaped by land, history, and people. Brahawi is one of the indigenous languages of Pakistan, mainly spoken in Balochistan and surrounding regions. It holds a unique place in linguistics because Brahawi belongs to Dravidian family, even though it is surrounded by Indo-Iranian languages. The story of Brahawi is a story of resilience. Though it faces challenges from dominant languages, it lives on in the voices of its people, in its songs, stories, and traditions. Every word spoken, every song sung. Future depends on those who cherish. In Pakistan, many regional languages shape who we are. One of them is Saraiki.
Saraiki is mainly spoken in South Punjab and surrounding regions. It belongs to the Indo-Aryan language family and has survived for centuries through poetry, folklore, and everyday speech. Saraiki language has been protected and promoted by many great writers and poets, including Khwaja Ghulam Farid, Shakir Shujabadi, and Ashul al-Fakir. This documentary explores how Saraiki is understood, practiced, and valued today. Saraiki is often linked with Punjabi because it is spoken in nearby areas and shares some similar words. Saraiki is considered a separate language because it has its own sounds, grammar, and literature. Saraiki is not regional language, but it is living as it is. दुख की गाल ये है तो सारी जनरेशन है वो अपनी माँ की जबान अलावन शर्मिंदगी महसूस करें पे जीअं कहीं वॾे शहर च वञो त असां उहा अपनी माँ की जबान अलावन के बजाय या उर्दू च शुरू थी वैसा आहियूं या कंहिं ॿी ॿोली शुरू थी वैसा आहियूं त असांखे फ़ख़ुरु करणु खपे जेका माँ की ज़बान है उहा हलाई वञे उन च फ़ख़ुरु करणु खपे शाल जीए मिठड़ी ॿोली अमां ॾिठी आई चइनि पिया असानी बोली असानी पहचान है। सराइकी होसी तो असारा कल्चर हमेशा दे लाए जिंदा रसी। ॻाल्हाइण वाले माण्हू तमामु दिलि साफ़ हूंदा आहिनि। सराइकी हिकिड़ी मिठी मिठी ॿोली आहे। Today we focus on Balochi, a language that is slowly fading away. It is one of the oldest regional languages in South Central Asia. Linguists believe it originated from an Iranian group of languages over 1,000 years ago. From villages to cities, Balochi language carried stories, poetry, and the tradition of Balochi people through generations. It is not just a way of speaking, it is the foundation of identity and connecting the past to the present. Balochi is an ancient language spoken mainly in Balochistan, Iran, Afghanistan and Pakistan. It belongs to Iranian language family and has rich oral history. This language connected deeply into Baloch identity and traditions. Today, the Balochi language is disappearing from the society. The main reason behind it that children are not using or practicing it at home. People prefer Urdu and English language instead of any other language. As a result, younger generation lose their connection with their mother tongue. When a language disappears, a whole culture disappears with it. Language carry history, identity and culture. If Balochi is not preserved, our future generation will lose their roots and tradition. Saving a language means saving our stories, values and ways of life. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Can I ask you some questions? Yes, sure. Can you tell us about your personal connection with the Balochi language? बलोची असल जब मैं मादरी ज़ुबान है बलोची मावजी मज़ना शी सीख तो बलोचिया बोलूँगा तो नज़रिए की मावजी रस्म रिवाज शी मिलजियाँ वजी फैमिली शी मिलजियाँ इतनी हाई भी पहचान है ज़ुबान. What challenges does the Balochi language face today and how can it be preserved? असल जब बशी जो बलोची मतलब कहीं भी है वहाँ घट बोली जाएगी क्योंकि जो छुप हो ज़्यादातर मतलब कि ध्यान देगा उर्दू है या इंग्लिश बोलूँगा तो मैं बलोची वाली ज़ुबान बोलूँ करूँगा इसी लोग अभी मतलब मास पे जमा ध्यान देगा वो चुका बलोची सिखा लेंगे शुरू अच्छी हमारे इंग्लिश आती उर्दू सिखा लूँगा तभी हमारी बलोची ज़ुबान मिला. Let's save our indigenous languages. This is not just a paper turned towards. This is what becomes when education ignores language, when migration separates generation, and when silence becomes the permanent. Even if words fade, the voice remains. Every song, every memory keeps it alive. Today, this language is slowly fading, not because it lacks beauty, but because it is no longer spoken.